Hello, everyone. Good morning, everybody. I'm Priyanjali from Bladder Wellness Team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic: stone management. Stones are hard deposits made of minerals and salts that form inside the body. Diet, excess body weight, some medical conditions, and certain supplements and medications are among the main causes of stones. There are many types of stones like calcium, uric acid, and crystalline stones. Stones can occur within the kidney itself as well as in the ureter, the tube draining urine from the kidney, or in the bladder. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of urinary system stones, today we have with us a renowned urologist, Dr. Ankur, who is specialized in several areas, including diseases of the lower urinary tract, urologic oncology, endourology, and minimal invasive surgical techniques like laparoscopy. His specialty is making people feel comfortable in his healthcare setting. He makes a special effort to provide his patients with access to the latest treatment options available, while also appropriately informing them of any potential complications that might come up if they are not able to comply with the treatment plans. He has helped hundreds of men deal with issues in many areas like diseases of the kidney, bladder, prostate gland, male infertility problems, male sexual health, and benign urological diseases. Dr. Ankur Singhal has rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that the patient health is in safe hands. Over to you, sir. First of all, welcome to this platform. And our first question for you, doctor, would be what is stone and types of stone? Thanks, Priyanjali, for your kind introduction. Yes, now coming back to the question, stones are basically, as you said, are deposits of minerals that occur inside your urinary tract. They are basically made up of such minerals which can be classified into four types. Mainly, 80% of them are due to calcium oxalate, and rest there are three more categories, which are uric acid, white in, or infection stone, and the other is cysteine. So these are Right. basically four types. Right. Doctor, if we could know what are the symptoms of stone, how does one know that he has stone? Patient usually present with the complaints of flank pain. Means he has pain on his sides, which might radiate to his groin or down to his perineum or lower abdomen or his tummy. So it could be that. That is the most common symptom. The other symptoms are nausea, vomiting that could be associated with it. The pain is very sharp in nature. It is very colicky, what we use the term. It is a colic. It usually lasts around 15 to 20 minutes, and it is a very severe pain. It could not be controlled with medication for those period, and this kind of pain the patient remembers for his life. And the other symptoms which include burning in micturition, burning in passing urine. There might be some blood as well, and there might be some associated infection in the urinary tract. So these are the basic symptoms which the patient present with if he has a stone. Right. Doctor, what causes stone to develop? Basically, these are due to metabolic causes. Most common thing that happens in our demography in India is dehydration, prolonged period of water deprivation. What happens is if a person goes out to his job and what he kind of avoids taking water, and when he comes, his water intake is reduced to around 1 to 2 liters. So that is the basic most common factor that causes stone. The other factors includes uh, diet deficient in milk or calcium, and diet that is basically more protein intake that contains more protein that causes uric acid stones, and there might be some genetic disposition as Right. Well, now that we know uh, how can it be caused,
Doctor, what are the precautions to avoid stone development? How does one do that? Means first, basically, the patient or the person has to change his dietary habits, which includes intake of sufficient amount of water, so as to not cause the stones. Because what happens is there becomes some saturation of these minerals while they pass urine. If the urine is too much concentrated with this kind of minerals, the stone crystallizes in the urine and then they form the stone, and that is how the stone grows. So the basic thing that one patient has to follow is to take sufficient amount of water in his daily routine. The other things which I would say is to increase milk and curd intake, which is good for calcium levels as well as for maintaining flora of the urinary tracts. So these are the basic factors which I would say. However, there is a long list which one can change if the patient has a recurrent history of stones. Suppose he is having a large size stones in a period of 1 year and 2 to 3 episodes of stone he is getting treated surgically. We could start some medications as well for that treatment. Right. Uh, Doctor, initially you mentioned about the pain which a one suffers if he has stone inside the body. Why does the pain last for 15 to 20 minutes? The stone is inside the body. So, It what is is the like logic behind it? means whenever patient or person suffers from that kind of pain, what happens is that pain is due to stretching of kidneys. Kidney is continuously producing urine and the stone is blocking that passage. So it is a cry for help from the kidneys. Suppose if somebody is hit and there is a level up to which he or she can cry, right? Right. So that is Right. what happens with the kidneys as well. So Mm-hmm. after 15 to 20 minutes of pain, the kidney ultimately gives up and that is what happens. Right. Well, very beautifully explained. I think this could be very helpful for our viewers who are watching us right now. We'll quickly move on to the next question, doctor. The next question for you would be: what should patient do if he or she thinks of having stone in particular organ? Well, the patient first, whenever he or she has have a pain, uh, she wants to get rid of that symptom only. So Right. she visits a nearby hospital, she or he, and then the patient comes in the hospital or a clinic, and then they get some painkillers from the medicine shop, or they get a painkiller shot in the hospital. So, to first is there is management of symptoms, that is the pain. Then after the patient thinks that, oh, what is the cause of that pain? For that, uh, I would say patient has to see a specialist. Uh, Means whatever in the vicinity of the patient is, he or she must come to a urologist if or if the patient has access to the urology services. Otherwise, physician would do to better for the better control of symptom, and then the patient can refer these patients to the urologist for the specialized treatment. Right. Uh, Well, we'll quickly move on to the next question now. Doctor, this is another very important question. I think all the viewers would want to know this. Do all stone require surgery? Hmm. That is a myth. All stone do not require surgery. The treatment of the stone lies in the size, location, and symptoms of the patient. Okay, so there are three factors. One is the size. Now, Mhm. if the if the patient is asymptomatic first, I would come to the symptom first. If the patient is asymptomatic, he or she will not come. It will be an incidental finding if the patient goes for an investigation and he is found to have a stone. So again, now the second thing comes in, if the patient comes to know about that he or she has a stone. Now the patient, if they have a stone, then the treatment depends on the size. Size vary from 1 mm to 10 mm, 20 mm, whatever the size of the stone is. Normally, kidney produces urine and it gets transported to his water to the bladder, and then he passes his urine. Now, this transport is happening from kidney to the bladder through a narrow tube that is called a ureter. It is a very slender and thin tube that is around 2 to 3 mm in size. So basically, what happens is if the stone is of a small size, suppose 3 mm or 4 mm, it normally passes through this narrow tube
and sometimes it gets unnoticed. And 95% of these stones up to 4 mm of size passes through the urine without the patient noticing that he or she has passed the stone. Now, this is the catch area. Patient thinks he may have some beer, or you know there are a lot of naturopathies that are going on this size of on the size of the treatment of the stone, that these are the stones that will naturally pass by. Okay, so the thing is, in the treatment which the patient requires is more than 4 mm of stones. Now the passage rate of the stones which are less than 4 mm is 95%, and those between 4 to 10 mm is around 50%. So 5% of the patient which have a stone less than of 4 mm in size, they would pass, uh, they will not be able to pass the stone because sometimes they get stuck. But 95 majority of the patient will pass this stone. So to help them passing these stones, sometimes we give this medicines as well for easy passage. Now comes the second criteria, that is 5 to 10 mm. For these stones, the passage rate varies from around 50%. Well, 50% of the stones will pass on their own, and 50% of the stones will get stuck. So we have to carefully watch them, see their symptoms, see their blood reports, and see how is it going on with the patient, if he is able to bear pain, or if the patient is having severe pain, or if the patient is asymptomatic. If the patient is asymptomatic, we give them medications to wait for around 1 or 2 weeks if the stone passes by. If the stone is stuck, then we have to take it out. Otherwise, and for more than 1 centimeter stones, we have to mostly operate them because the passage rate is just 5%. So we have a low threshold for larger size stones, and low threshold and high threshold for higher larger size stone, and low threshold for lower size stones to operate. Right. Doctor, also, I think you will be the right person to answer this. You have patients mostly who reach you because of the pain which they are having inside the body all of a sudden. So, can this pain be confused with any other sort of pain? Mostly patients they think कि gastric का problem हो सकता है, तो शायद बिल्कुल ignore कर बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल कल ठीक हो जाएगा, गैस का दवाई खा लेते हैं. तो ऐसे भी patients आते हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल मतलब 50% ऑफ द पेशेंट्स दे हैव सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एज वेल एज द दे समटाइम्स कंफ्यूज देयर पेन विद अपेंडिसाइटिस. सो ऑन द राइट साइड, जैसे राइट साइड पेन हो रहा है तो उसमें जनरली अपेंडिक्स एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है हमारे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं. सेकंड इज Right. स्टोन दैट प्रेजेंट्स विद अ कोलिकी पेन. तो Mhm. दोनों के थोड़ा सिम्टम मैच भी करते हैं और थोड़ा डिफरेंट भी है. Mhm. तो अगर आपका पेन अगर राइट साइड हो रहा है, कोलिकी है, और फिर उसमें अगर यूरिन के सिम्टम्स है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली अ स्टोन. और Right. उसमें अगर आपको वॉमिटिंग, नोजिया ये सब लग रहा है, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली अ अपेंडिसाइटिस. तो ऐसे अपने को डिफरेंशियल बनाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड द पेशेंट प्रेजेंटेशन. राइट. तो आई थिंक अभी जितने भी लोग हैं हमारे बीच आजकल स्टोन बहुत कम उम्र में हमें नजर आते हैं. पहले ऐसा नहीं था. बट विथ टाइम विद द लाइफ स्टाइल विच वी आर लीडिंग विद द फूड बिल्कुल हैबिट्स विच वी आर हैविंग, जनरेशन चेंज होता जा रहा है, डिजीजेस बहुत कम उम्र में आ जा रहे हैं. तो टू नो द डिजीज एंड टू नो द सिम्टम्स एंड टू नो हाउ किस चीज में कैसा इफेक्ट बॉडी में दिखता है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी राइटली सेड. आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन, दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस राइट नाउ. डॉक्टर, ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ the pain which we are talking about, there is also an information which I think is moving around the market कि स्टोन अगर एक बार होता है तो बार बार होने का संभावना रहता है. क्या ये सच है? मैं सबसे पहले तो इस चीज पे आऊंगा कि इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ रहा है. डेफिनेटली क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वर्क लाइफ स्टाइल काफी बदल रही है. नाउ द हम्म. पीपल आर मोर आउट इन द फील्ड, दे आर मोर सीवियरली डिहाइड्रेटेड. वो पानी का इंटेक उतना ही कम लेते हैं. दे आर मोर एक्सर्टिंग देमसेल्व्स टू शाइन आउट.
तो उसके कारण उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड जो है, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स अवॉइड होती हैं। इसके कारण इंसिडेंस बढ़ रहा है। पहले मैन टू वुमेन का रेशियो होता था 3:1, मतलब मैन में ज्यादा कॉमन होते थे, पुरुषों में ज्यादा कॉमन राइट। होती थी ये स्टोन की डिसीज। बट अब दोनों में इंसिडेंस बराबर सा हो गया है। हम्म। क्यों हो रहा है कम? क्योंकि वुमेन आर नाउ आल्सो गोइंग टू वर्क एज वेल इन द फील्ड। एग्जैक्टली। सो अब उनका भी डिहाइड्रेशन पीरियड बढ़ रहा है, पहले वो घर पे रहते थे, so अगेन द इंसिडेंस द सेम फैक्टर्स आर प्लेइंग विद देम एज वेल। नाउ अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि रिकरेंस रेट, कि दोबारा हो जाता है। हम्म। पहली चीज, ये डायग्नोस आप इसलिए होने लगे हैं क्योंकि अब इमेजिंग फैसिलिटीज आर इन आर हैंड, मतलब आपके नियर बाय एरियाज में है, इजीली एक्सेस है, अल्ट्रासाउंड आप इजीली कहीं पे भी करा सकते हैं, इजीली डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल है। पहले डॉक्टर्स इतने थे नहीं, तो उनको पता नहीं होता था, इमेजिंग इतनी इजीली मिलती नहीं थी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स बड़ी मुश्किल से अल्ट्रासाउंड होते थे, सेंटर्स कम थे। तो अब ये इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डायग्नोसिस अच्छी होती जा रही है। दूसरी चीज जो है रिकरेंस रेट का, वंस अ स्टोन फॉर्मर इट इज ऑलवेज, पर्सन इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, मतलब उसमें फैक्ट्री लगी हुई है एक स्टोन बनाने की। तो इट इज लाइक कि जो डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंस रेट है, डेट इज 5 ईयर्स में 50% पेशेंट को रिकरेंस होती है, और 10 ईयर्स में 80%। सो आपको जो भी स्टोन जैसे का भी ट्रीट करते हैं, सपोज सर्जिकली ट्रीटमेंट होता है, तो उसको हम जरूर एडवाइस करते हैं आप ईयरली एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, जिससे कि हम्म। दे शुड नो कि भाई दोबारा स्टोन तो नहीं बन रहा, और बन रहा है तो फिर अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करें या फिर पानी ज़्यादा पिए। हम उनको पहले ही एडवाइस कर देते राइट। क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, हम हमेशा हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, ऐसे बहुत समय हो सकता है कि प्रॉब्लम अंडरलाइंग हो कि हमें पता नहीं चल रहा है उस हैं। बारे बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। विच इज वाई आपको साल में एक बार एक रूटीन चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। कि हम्म, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है या फील नहीं हो रहा है, वो आपको डेफिनेटली क्लियरली समझ में आ सकता है। साल में एक बार बॉडी चेकअप बहुत जरूरी है। ऑल्सो नहीं वी बिलीव ये कि तो इनिशियल स्टेज में डॉक्टर, कोई भी बीमारी है जो इनिशियल स्टेज में ट्रीट हो जाता है, उस वो क्योर होने में भी आई थिंक आसानी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन इसमें एक भ्रम भी है। अभी जो जैसे लैब्स होती हैं जनरली, जैसे लाल पैथ लैब है, SRL है, सारी लैब्स हैं जितनी भी बड़ी चेन्स है, व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ मिथ कि अपन ने एक ब्लड टेस्ट का पूरा एनुअल पैकेज कराया और राइट। दैट सॉर्ट थिंग्स आउट। सो नॉट ओनली द ब्लड टेस्ट, देयर आर अदर एसेंशियल टेस्ट एज वेल, जैसे एक ECG हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। ये भी एक टेस्ट अपने को एनुअल चेकअप में जरूर इंक्लूड कराने चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइज इन दिस एज वेल। तो जो कंपनीज कराती हैं या फिर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कराते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनमें ये इंक्लूडेड जरूर होता है। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, दे व्हाट हैपेंस इज दे बुक अ एनुअलाइज्ड फैमिली हेल्थ प्लान फ्रॉम दिस लैब्स, और सारे ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, बट दे डू नॉट गेट दिस ECG, अल्ट्रासाउंड एंड बेसिक टेस्ट डन। तो वो चीज एक मिस हो जाती है। तो राइट। इसमें आई वुड से कि ये टेस्ट जरूर करानी चाहिए हर किसी को। राइट, बिल्कुल, ये बहुत हेल्पफुल एक सजेशन था हमारे व्यूअर्स के लिए। आई थिंक आप सभी इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे। डॉक्टर, एक और बिलीफ है जो आई थिंक अक्सर लोग मानते हैं, ज्यादा बियर इनटेक से क्या स्टोन जल्दी पास हो सकता है? आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल नहीं सेइंग दिस, आपका क्या मानना है? नहीं, ये एक मिथ भी है, वो पता है, ये डॉक्टर्स में भी मिथ है। मैं मतलब रोज ही देखता हूँ, कई डॉक्टर्स कहते हैं कि 4 बियर पी लो एंड देन स्टोन विल पास। हम्म। बियर हम्म। कुछ नहीं करता। बियर व्हाट हैपेंस इज, बियर यूरिन डायूरेटिक है थोड़ा सा, उसमें यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे मैंने हम्म। एडवाइस किया, आप अगर पानी पी रहे हो तो इट इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट। अगर आपने तब जैसे 4 बियर पी ली, तो यू हैव इनटेक ऑफ अराउंड 1 लीटर ऑफ वाटर एट अ वन गो। राइट। राइट। तो उससे छोटा स्टोन जो है, छोटे साइज का स्टोन, वो पास हो जाएगा बस। तो दिस ऑल दिस मिस प्ले अराउंड दिस स्मॉल साइज स्टोन्स, है ना, उसके ऊपर व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स दे डू इंजरी एज वेल। तो मिथ है वो एक, एक्चुअली इट इज जस्ट इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स कि आपने पानी का इंटेक बढ़ा दिया एंड देन हम्म। इट हैपेंस। अब वो सोसाइटी में राइट। इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि ये चीजें बड़ी पॉपुलराइज होती हैं जो भी हैबिट्स है। तो
राइट राइट। बेसिकली हमारा ह्यूमन नेचर ही आई थिंक वैसा है कि अगर कुछ हमें करना है तो हमें उस चीज को करने के लिए हम कुछ ना कुछ बहाना जरूर ढूंढ लेते हैं। द मेन रीजन इज आपको करना है, तो करना है बस। दैट्स इट। तो उसको, जिसको अगर बियर पीनी होगी तो वो पिएगा, उसके बस उसको एक और थोड़ा पीनी होगी तो एक और पी लेगा, बस ऐसे ही होता राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। डॉक्टर, बीइंग इन एन इंडियन सोसाइटी हम हमेशा घरेलू नुस्खे ढूंढते हैं कि क्या घरेलू नुस्खे हम अपना सकते हैं। तो स्टोन्स के लिए ऐसा कुछ होम रेमेडीज है जो हम अपना सकते हैं? है। देखो, पहली चीज तो जो सबसे पहले मैंने हाईलाइट करी, डेट इज इनटेक ऑफ वाटर इन करंट हम्म। डेली, मतलब डेली लाइफ स्टाइल में यही चेंज है। दूसरी चीज जो है कि इनटेक ऑफ मिल्क एंड कर्ड, बिकॉज मिल्क में जो कैल्शियम होता है डेट इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्टोन। ये एक बड़ा मिथ है कि हम दूध में कैल्शियम होता है और फिर दूध छोड़ देते हैं, कि कैल्शियम टैबलेट छोड़ देते हैं कि कैल्शियम से स्टोन। कैल्शियम इज अ वेरी गुड मिनरल एंड दैट अवॉइड्स फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इफ यू टेक डेली इनटेक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम। तो ये एक बड़ा मिथ है कि कैल्शियम लेने से अपना स्टोन बनता है, जबकि इसका बिल्कुल उल्टा होता है और कैल्शियम इंटेक से स्टोन फॉर्मेशन कम होता है। तीसरा जो चीज है, फैक्टर है दैट प्लेज इज कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम रखना चाहिए। प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेक से थोड़ा सा किडनीज पर लोड पड़ता है और उससे स्टोन फॉर्मेशन भी बढ़ता है। और बाकी छोटी मोटी रेमेडीज के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ये तीन आर द फैक्टर्स दैट वुड प्ले अ गुड रोल इन मेंटेनिंग गुड डाइटरी हैबिट फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। अदर जो फैक्टर्स कहते हैं कि सॉल्ट इंटेक लिमिटेड रखो, 2 to 5 ग्राम, so that is a good habit because again it decreases salt load on kidneys। इसमें जो आम चीजें होती हैं जैसे अचार, पापड़, इनमें नमक काफी ज्यादा होता है जो कि आम लोगों को पता नहीं होता। तो इन चीजों को भी अवॉइड करा जा सकता राइट। डॉक्टर, बिकॉज यू मेंशन अबाउट प्रोटीन, हमारा आज का जनरेशन ऐसा है जिनको लगता है कि प्रोटीन पे ही हमारा शरीर चल रहा है। मतलब अगर बॉडी बनाना हो या बॉडी घटाना हो तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। खासकर हमारे जनरेशन में हमें ये नजर आ रहा है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, एक प्रोटीन शेक ले लो, लंच स्किप कर दो, कुछ प्रोटीन पाउडर अपने खाने के साथ है। ये मिक्स भी करके आप खा लो। तो क्या मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? नेगेटिव इफेक्ट इसका ये है कि यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एक्चुअली। जब भी एक बैलेंस डाइट होती है उसमें हम्म। 50 to 60% आर कार्बोहाइड्रेट्स, 20% are fats and 20% are protein. Now this राइट। 20% is as an essential thing, okay, for of fats as well। और आप अकेला प्रोटीन प्रोटीन ले रहे हो, अकेला आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, सो दैट इज नॉट गुड। अभी क्या चल गया है, जैसे आप बता रहे हो कि वेट लॉस स्ट्रेटेजीज में बस कहते हैं आप प्रोटीन शेक ले लो, एक हम्म। मल्टीविटामिन ले लो और देन ड्रिंक वाटर। ये वेट लॉस के लिए ठीक है बट नॉट मेंटेनिंग फॉर अ गुड लाइफ स्टाइल। अगर आप सोच रहे हो कि इसी पे यू कैन सर्वाइव, देन इट इज कॉजिंग यू योर बॉडी मोर डैमेज देन इट इज हीलिंग योर बॉडी। तो लॉन्ग टर्म में इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए। राइट। Well, viewers, this I think this was a suggestion for you all. Take it or drop it. पर अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर जिंदगी लंबे समय के लिए जी सकते हैं। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये सबके जहन में होगा ये सवाल। पानी अगर पीना है तो कितना पानी पीना है? उसका अमाउंट कितना होना चाहिए मिनिमम एटलीस्ट? नॉर्मली हमारे में जो कहते हैं कि यू शुड प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ यूरिन जो कि हम्म। किडनी अपना जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है निकाल सके। अब वो आप नॉर्मली व्हाट वी सजेस्ट इज कि गर्मियों में थोड़ा वाटर इनटेक स्वेटिंग ज्यादा होती है तो 3 to 4 लीटर्स, एंड ठंडों में 2 to 3 लीटर्स, जस्ट टू इनफ प्रोड्यूस 2 to 3 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। तो डेट इज अ गुड थिंग दैट अगर आप इनफ अमाउंट में यूरिन, मतलब पेशाब आपका यूरिन बन रहा है, तो डेट टोटली डिपेंड्स ऑन इट। अगर आप फील्ड में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको स्वेटिंग नहीं है, फील्ड वर्क नहीं है, तो फिर आपका 2-3 लीटर पानी में भी काम चल जाता है। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क हैबिट्स और आपका कैसा लाइफ स्टाइल है। बेसिकली वी आर सेइंग कि 2 लीटर तो पीना ही चाहिए किसी को पानी हर दिन में। कम से कम, कम से कम। एक्चुअली ये वुमेन्स में मैंने जो देखा, अपने जैसे मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, दे काइंड ऑफ अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर इन देयर डे टाइम मोस्टली, राइट। कि पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ेगा या जो भी फैक्टर्स होते हैं।
So what Exactly. they do is they go starvation of water. They face starvation of water. एक गिलास पानी सुबह पीते हैं 8 बजे, और फिर रात में 8 बजे अपना एक गिलास या 2 गिलास पानी पिए, दैट्स इट, Hmm. जस्ट टू अवॉइड कीट गोइंग टू टॉयलेट. तो बेसिकली आई अवॉइड ऑल माई फीमेल पेशेंट्स कि आप अपने साथ 2 बॉटल जरूर कैरी करिए, 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर, और उसको पीजिए. उससे आप अफ्रेड नहीं होइए कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे तो उससे आपको इन्फेक्शन होगा. ये भी एक मिथ है कि पब्लिक टॉयलेट यूज करने से इन्फेक्शन होता है. आप अगर नहीं पियेंगे तो फिर यू आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन ड्यू टू Right. Right. नॉन पैसेज ऑफ यूरिन. वेल आज हमें बहुत सारे बेहतरीन सलाह मिल रहे हैं डॉक्टर से, एंड आई थिंक वी ऑल आर गोइंग टू टेक दोज पॉजिटिवली, एंड विद दैट आई कैन सी आवर व्यूअर्स actively participating in today's live. I can see few questions coming up. डॉक्टर, हमारा पहला सवाल आ रहा है आकांक्षा पुरी से, जो पूछते हैं, should I follow up with regularly after the stone management procedure? स्टोन मैनेजमेंट प्रोसीजर के बाद जैसे मैंने एडवाइस किया, फॉलोअप हम्म, तब चाहिए जब आपको रिकरेंट लार्जर स्टोन्स हो रहे हैं एंड अगेन सिम्टम्स यू आर डेवलपिंग. मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हर 6 महीने में एक बार यूरोलॉजिस्ट को दिखानी है. एक आप अल्ट्रासाउंड कराइए ईयरली, सी योर किडनीज. इफ दे रिपोर्ट अ स्टोन, देन वी गेट अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, सीटी डन. इफ इट इज कॉजिंग यू सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं. अगर नहीं है तो फिर वी ऑब्जर्व. So it is not necessary you go to a urologist. Just get your basic test done and get a follow-up accordingly. right. Doctor, the next question comes from Amit, who asks, are there any specific food which can cause kidney stone more serious? And also, are there some food which can help to reduce the stone? I think the second question has been answered already twice. We'll go with the first question, अब doctor. देखिए सोसाइटी में एक मिथ है अगेन कि बीजे वाली चीजों से स्टोन बनते हैं, जैसे टोमेटो, Hmm. ब्रिंजल, और मतलब लौकी नहीं खाइए, जितनी भी बीजे वाली चीजें हैं, इफ दे हैज अ सीड दैट विल स्टक इन योर किडनीज एंड दैट विल कॉज अ स्टोन. सो दैट इज नॉट द थिंग. Right. It all gets Mhm. digested. Okay. The thing is, we get a stone analysis done, and there is a long list of tea, coffee. There are like 1,000 things that are mentioned on those reports, which are not practical in any way. कि मैं आपको कुछ भी कहूँ कि आप ये 15 चीजें छोड़, 15 चीजें नहीं है, फिर वो 1,500 चीजें, and these cannot be done in this lifetime, means what is the thing. So the basic things which I have discussed is just concentrate on drinking water. Basic things are these are the just basic things which will prevent majority of the stones in majority of the patient, like 90% patient. For those 10%, this dietary precaution won't do much. We have to start some medication, and which can be done after consulting with a urologist. डॉक्टर, आपने इनिशियली हमें ये भी कहा कि हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं, अगर स्टोन का साइज छोटा हो तो वो पास हो जाता है, तो प्रोसीडियर क्या होता है, कैसे पास होता है डॉक्टर? डज इट ब्रेक द स्टोन इनटू पीसेस? नो नो, दिस इज अगेन अ मिथ कि स्टोन घुलता है, घुल घुल के निकल जाता है या कट कट के निकल जाता है. कई पेशेंट कहते हैं कि कट कट के निकल गया. राइट, दिस आई हैव डज हर्ड नॉट इट, हैपन. यस। या, so this thing does not happen. Again, I have told you कि जैसे यूरेटर का साइज इज 2 to 3 mm. सो 4 to 5 mm का स्टोन अपने आप पास हो जाता है थ्रू नॉर्मल पैसेज ऑफ ए यूरिन, दैट गोज अननोटिस्ड. Okay, so 95% of the times this stone will pass like as a passage. Boat is just traveling through the river current and it will go to sea. So this is the basic thing. अपन जैसे नाव कश्ती में बह जाती है अपनी, तो वैसी चीज है, स्टोन भी अपना आपका यूरिन पास हो रहा है. इट वोंट गोट नोटिस ऑल दैट. समटाइम्स नोटिस होता है, लेकिन समटाइम्स नहीं होता मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट में. राइट, क्या ये प्रोसेस पेनफुल होता है डॉक्टर? नहीं, छोटे स्टोन्स अगेन अगर वो कहीं पे फंसा हुआ है तो कभी कभार तो वो पेन करके निकलता है, कई बार पता भी नहीं चलता. राइट. देन विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछ रही है श्रेया सुमन. शी आस्क्स, इज देयर एनी जेनेटिक कंपोनेंट टू किडनी स्टोन्स? यस डेफिनेटली. मीन्स अभी जो नई रिपोर्ट्स आई हैं, देर इज नॉट अ स्पेसिफिक जीन एज सच कि अपन एक जेनेटिक टारगेटेड थेरेपी चला सकें. बट हाँ, इसमें जेनेटिक डिस्पोजिशन है. जैसे पेरेंट्स को रहता है तो बच्चों में भी कॉमन होता है.
some factors also include like diabetes, obesity, hypertension. These are some factors which can be associated, but not I means it is not like all diabetic patients will have stones. It is also not like that. So these factors increases risk, but it is not a dictum that this will have stones. This will increase the risk. राइट। डॉक्टर, वी ऑल्सो नो कि एक्सेसिव वेट से भी स्टोन ऑकर हो सकता है। तो बिल्कुल। अगर अगर स्टोन है शरीर में, चाहे उसका साइज छोटा हो या हम मेडिकल प्रोसेस प्रोसीडियर से हम पास कर चुके हैं, क्या एक्सरसाइज हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट को उस वक्त? एक्सरसाइज इज डेफिनेटली रिकमेंडेड। वो इसलिए भी रिकमेंडेड बिकॉज ऑल्सो नॉट फॉर द स्टोन्स बट फॉर द जनरल वेलबींग ऑफ द बॉडी। अगर राइट। आप अच्छी से सपोज 20 मिनट या 30 मिनट्स भी अपने बॉडी को ध्यान देते हैं, that that will add up for your lifetime, that will add up to your lifetime, okay? That these effects are not visible like on day one, day two. This will be visible after in like when you get in your fifth or sixth decade or seventh decade. So the problem they you will face if you do not do anything in your current days, like in your mid 30s or 40s, these will add up for your sixth or seventh decade in your 60s and 70s. So you will face problem in that era, not today, not now, but in the later future. राइट। वेल, यही आई थिंक यही बेसिक चीज जो है हम मिस कर जाते हैं अक्सर। एंड डॉक्टर अगेन एंड अगेन आज मेंशन यही चीज कर रहे हैं कि बेसिक लाइफस्टाइल आप लीड कर रहे हैं। वी ऑलवेज से दिस कि ज्यादा लग्जरी, ज्यादा ऑफ कोर्स हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, पर लाइफस्टाइल हमें हमेशा बेसिक ही रखना चाहिए। विच इज द रीजन वाई हमारे कंट्री में आई थिंक अभी जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा कम गया है, जबकि इंडिया बहुत आगे था इस चीज में। आई थिंक फूड का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू कंपेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक जापान, उनका अगर आप देखेंगे उनका जो लिविंग रेट है वो 80, 83, 84 इस तक जाता है। ऑल्सो वी सी कि काफी सारे लोग हैं जो 100 साल भी जीते हैं। इंडिया में आजकल बहुत कम दिखता है ये। जापान में हम अगर हम देखेंगे उनका फूड हैबिट्स, वो नॉन प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, जो इंडिया में समय के साथ बहुत चेंज होते जा रहा हाँ, है। हमारे जो स्पाइसेस थे, हमारे जो मसाले थे, वो विद टाइम हम छोड़ दे रहे हैं, पर उसका भी हमारे हेल्थ में एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द फूड हैबिट्स जो समय के साथ बहुत चेंज होते जा रहा है? देखिए, व्हाट हैपेंस इज व्हाट वी सी वी टेक इट। अपन वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत अच्छे से ऑब्लाइज करते हैं कि नहीं बहुत राइट। अच्छा चल रहा है, सो वी राइट। कॉपी देयर हैबिट्स, सो वी हैव कॉपीड देयर हैबिट्स ऑफ eating like fast food and processed food, but we have not copied their lifestyle as such. We are not doing their work, like we have copied the easy things which are tasteful, which I would say, but we have not copied their culture इन सिंग इन टोटल। तो अपन ने राइट। अपना अच्छी चीज छोड़ दिया, उनका बुरा चीज पकड़ लिया, ऐसा है। राइट। राइट। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, बाकी तो बस फिर ये है कि आपकी बॉडी आपको हमेशा साथ देती है। राइट। हम अक्सर ये चीज कहते हैं कि ज्यादा दिन नहीं चाहिए, 24 घंटा में 1 घंटा अपने आप को दीजिए, जस्ट 1 आवर एंड योर डे इज डन। आप पूरे दिन के लिए रिलैक्स रहो, आप काम करो, आप समय पे सो, समय पे खाओ, और 1 घंटा अपने आप को दीजिए। दैट्स इट। नाउ मूविंग अहेड, हमारा अगला सवाल आ रहा है कुमार से, जो पूछते हैं, सर व्हाट इज द चांसेस ऑफ ब्लड पॉइजनिंग इन स्टोन्स, since it is the biggest complication in kidney stones? नहीं, ब्लड पॉइजनिंग को मेरे ख्याल से आप कर रहे हैं कि किडनी फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ऐसे स्टोन्स आर नॉट पॉइजनस फर्स्ट। इससे क्या होता है, सपोज स्टोन इज ब्लॉकिंग योर पैसेज ऑफ यूरिन। सो किडनी का एक ही फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। वो भी क्यों? इट इज जस्ट आपका जो ब्लड है उसको फिल्टर कर रही है, लाइक अपन जैसे वाटर फिल्टर घर पे लगाते हैं। किडनीज आर योर वाटर फिल्टर और ब्लड फिल्टर इन योर बॉडी। अगर आपका वो फिल्टर आगे से बंद हो जाए, या वो तो यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ दिस यूरिन डज नॉट गेट प्रोड्यूस, आपका जो ब्लड में टॉक्सिक प्रोडक्ट है डेट इंक्रीजेस, जो वेस्ट सब्सटेंसेस है।
तो उसके कारण फिर क्रिएटिनिन बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसके लिए टेस्ट कराते हैं। तो उसके लिए हमें टाइमली मैनेजमेंट ऑफ स्टोन करना पड़ता है। जो स्टोन का मैनेजमेंट आज की एज में काफ़ी इजी है। वी हैव लेजर, वी हैव एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि 2 से 3 mm की दूरबीन होती है। वी डायरेक्टली गो फ्रॉम योर नेचुरल ऑरिफिस, मतलब आपका जो वाटर पाइप है उसके थ्रू जाते हैं अप टू योर किडनी, वी टेक आउट दिस स्टोन एंड देर इज नो कट ऑन योर, मतलब पहले सर्जरी के नाम से डर जाता था पेशेंट काफी। नाउ द मैनेजमेंट हैज बिकम सो इजी कि अभी कोई कट आपको बॉडी में पता नहीं चलता। आप ओटी में जाते हो, ओटी से बाहर आ जाते हो, आप कहते हो कि क्या हुआ, मेरे को तो कुछ लग ही नहीं रहा। ऑन द वेरी फर्स्ट डे पेशेंट स्टार्ट्स टू वॉक, engage in his daily activity, can go to office. It is just have become a office procedure. पहले जो इतना बड़ा इंसिडेंट लगता था वो सब अब खत्म हो चुका है। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि स्टोन का मैनेजमेंट इतना इजी हो गया है। तो नॉर्मली दिस काइंड ऑफ थिंग्स रियरली हैपन, और हैपन ड्यू टू ignorance और बैड एडवाइसेस फ्रॉम आइदर योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की। इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होता। ये होता है, डेफिनेटली डेरिटरीज इफेक्ट होते हैं। और समटाइम्स वी हैव सीन किडनीज आर गेटिंग इनफ डैमेज्ड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स, कि रिकवरी भी नहीं हो पाती उनकी स्टोन रिमूव करने के बाद भी। तो उन केसेस को देख के बड़ा दुख होता है हमें कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन टूडेज एज, व्हेन द मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट योर डोर स्टेप। तो राइट। उसमें मैं एडवाइस करूंगा कि अपने आप को सिम्टम्स को आप एक लिमिट तक इग्नोर करें, अपने खुद का भी विवेक इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद access to your nearby medical facility and get treated. राइट। हम अक्सर ये चीज हमारे व्यूअर्स को कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन की ओर ना जाएं। आसपास के सलाहों को आप ले, आप ऐसा नहीं मत ले, आप लीजिए। बट हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद हैं, आप उनका भी सलाह लीजिए। आप जाइए उनके पास, अपने प्रॉब्लम्स बताइए, ना कि उनको उसको प्रोलोंग कीजिए। आप अक्सर प्रॉब्लम्स इसी इसी तरीके से बढ़ता है, आप उसे बढ़ने देते हैं इसीलिए वो बढ़ता है। तो उसे बढ़ने ना दे, हमारे एक्सपर्ट्स के पास जाए, आपको हमेशा बेस्ट सजेशंस ही मिलेंगे। विद दैट डॉक्टर, आई बिलीव इट वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन टुडे। हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था। जो ऐसे कारण के बारे में आज हमने बात किया जो लोग ऑन अ डे टू डे लाइफ फेस कर रहे हैं। ऑल्सो आई थिंक ये सारे सलाह उनके दैनिक जीवन में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। बिफोर वी लीव डॉक्टर, कोई टेक होम नोट आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं बस यही कहूंगा कि आपकी बॉडी आपका ख्याल रखना चाहती है, आप भी अपनी बॉडी का ख्याल रखें। बॉडी ट्राइज टू रिपेयर इटसेल्फ, आपका हमेशा साथ देना चाहती है, आप भी उसका साथ दें। बाकी अपनी डाइटरी हैबिट्स और अपना बेसिक जो दैनिक दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाइए, और डेट विल वर्क फॉर यू फॉर योर होल लाइफ टाइम। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी बस आई वुड लाइक, बाकी आपके हाथ में है, इट्स ऑल इन योर हैंड। अगर ऑल आप ऑफ माई चाहेंगे। हैंड्स। राइट। तो Well, with that, viewers, that was Dr. Ankur Singhal for us. Thank you so much, Doctor, once again for your valuable time. It has seriously been quite a informative session for all our viewers. We look forward to many more such sessions in the coming time. And thank you, you viewers, for your excellent participation. For more information and update, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you so much.